राइट। सो जैसे कि आप सभी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि आप लोग सभी योगा प्रैक्टिस करते हैं, बट देयर इज सर्टेन ब्रेक दैट यू हैव गॉट इन योर योगा प्रैक्टिस. So, I would just, as in today's class, which is your first class, I would just need to ask you that what is your uh, what is your knowledge about yoga? What do you think yoga is? I wouldn't say the knowledge because yoga is very vast and we keep on learning, we keep on reading. I would just say कि आप एक योगा के टर्म को क्या समझते हैं जब there is the term yoga which is being introduced. सो आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं. बट अगर आपको इंट्रोडक्शन देना हो योगा के बारे में, जो जो आपने प्रैक्टिस किया है, जो आपने योगा समझा है, सो कैन एनीवन टेल मी अबाउट देयर नॉलेज or their knowing about yoga, what they have got from yoga? Yes, anyone? So Mansi ji can share her experience. I think she can explain her experience. Please, Mansi ji. Yeah. मैम बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी ये स्पिरिचुअली और दोनों ही तरह से है, मतलब फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी. बिकॉज जब हम मेडिटेशन और योग मुद्रा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कनेक्टिविटी गॉड और फिर हम लोग अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं. और जब हम फिजिकली होते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब जो भी हमें फिजिकली जो इश्यू आ रहे हैं उससे हम लोग बाहर निकल पाते हैं. सो बेसिकली मैं योगा को इतना ही जानती हूँ. या फिर ज्यादातर हमने रामदेव जी को देखा है कि कपाल भारती या बहुत सारे अलोंग बिलोंग एंड ऑल दैट. ओके. तो आप अपने योगा की जर्नी को कहते हैं कि एक स्पिरिचुअली आप बेटर तरीके से, मतलब आप एक स्पिरिचुअल रेल्म में आप योगा को मानते हैं. मतलब योगा आपके लिए एक स्पिरिचुअलिटी के लिए एक बेटरमेंट है, राइट? टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल बेटरमेंट. यस मैम. ग्रेट. अच्छा, एक मिनट. नीलम जी was not in has not been introduced, right? नीलम जी, are you there? I'm so sorry. Neelam ji, can you listen to me? Are you able to hear me? Yes, ma'am. Sorry, I not ask you for your introduction. I couldn't see you earlier. So, No, ma'am. Actually, I joined late little bit because I'm traveling right now. अच्छा, So so you on the way, when did you join? अभी join किया क्या? 10 minutes, 10 minutes late I joined अच्छा, अच्छा. after Oh, my lecture. so probably जब भी आप रीच करें और जहाँ पे ठीक से बैठ के जब आप अपना कैमरा ऑन कर सकें, तो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, ओके? Oh, ma'am. Yeah. Thank you. या. मैम, सो आप योगा के बारे में बता रहे थे, तो मैं आपको मेरा एक लाइव एग्जांपल देता हूँ. मैंने जैसे पहले बताया कि मैंने 3 साल लगातार योगा किया. ठीक है, मेरा बॉडी पूरा फ्लेक्सिबल था, ऐसे कि एकदम रबर जैसा था. ठीक है, सब योगा में कर सकता था. पर बीच में थोड़ा ब्रेक आ गया. और अभी मैंने 1.5 महीने से योगा स्टार्ट किया है और इसके साथ डाइट भी अच्छी हेल्थी ले रहा हूँ. मैंने 1.5 महीने में मेरा 12 किलो वेट लॉस किया. मैंने इज द पावर ऑफ योगा. ओके. और मेरा जो हेल्थ में जो प्रॉब्लम थे, थोड़ा थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन जैसा रहता था, वो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहता है. और अभी काम भी थोड़ा ज्यादा कर सकता हूँ और एक अलग सी एनर्जी फील रहती है. तो इट्स अ पावर ऑफ योगा ऐसे. ओके. ओके. हाँ. Anyone who wants to share their experience? Thank you, Nilesh ji, for sharing yours. So, anyone else who wants to share their experience? अच्छा, डेफिनेशन ऑफ योगा तो सभी को पता होगा. हाँ, बहुत सिंपली हम योगा का डेफिनेशन जैसे मानते हैं. योगा का डेफिनेशन
Okay. So I will not go with the definition and all. आप सभी को syllabus मिला है YCB का योगा वॉलंटियर कोर्स हाँ syllabus सिलेबस मिला है मैम, सभी सिलेबस को मिला मिला है है? मैम। Okay, great. So फर्स्ट ऑफ ऑल आज की क्लास में क्योंकि ये एक इंटरैक्टिव क्लास होने वाली है, तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखेंगे टू हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ योगा. ओके, सो जस्ट अ मिनट. So let me share my screen and also I will be able to share the syllabus. Okay, so as you can see it here. Okay, just a minute, I will make this. So this is the syllabus for from the Yoga Certification Board, Ministry of Ayush, Government of India, and syllabus for the Yoga Volunteer Program. So what is the name of the certification? That is called the Yoga Volunteer. It is good and open for all, and that's why there is no eligibility criteria here. So on and on, when we see the role or the description of this yoga volunteership program is for the promotion of well-being of oneself and the society at large. So this time the theme of the yoga you must have seen is one health, one earth, one health, right? So it also since we are talking about the yoga volunteer, its role and description is about if I talk about my health, and with my health, I am able to see the health with the others as well, with the surroundings as well. Okay, so जैसे कि आप सभी ने ये बताया है कि मैं योगा प्रोग्राम इसलिए करना चाहती हूँ जिससे कि मैं अपनी भी हेल्थ को अच्छा रख सकूं और जिससे कि मैं और लोगों को भी हेल्प कर सकूं इस सर्टिफिकेशन से. ठीक. सो योगा क्लासेस चाहे आप ये प्रोग्राम लें तो योगा क्लासेस आप पार्ट में भी ले सकते हैं. यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट एज वेल. ओके, यू कैन कंडक्ट द योगा ब्रेक प्रोटोकॉल एट वर्क प्लेसेस एज वेल. टू द डिफरेंट वर्क प्लेसेस यू कैन कंडक्ट द योगा programs. Okay, Nilesh ji, what do you want to say? अरे मैम एक्चुअली सॉरी, वो कुछ मेरे से प्रेस हो गया है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है. Okay, 1 मिनट है मैम, 1 मिनट 1 मिनट. please remove this. हाँ मैम 1 मिनट 1 मिनट. ये नीचे का वो ना पेन पे क्लिक हो गया, 1 मिनट. Mm-hmm. हाँ अभी हो गया, अभी सही हो गया मैम. सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग. Okay, no issues. Having the age limit, there is no age limit as such. Duration of the course, if you see the duration of the course, that is equivalent to not less than 36 hours. 36 hours का जो है ये duration रहता है. And certification किनको दिया जाता है? जिनकी 80% attendance हो क्लास में shall be eligible for the certification. And certificate to the candidate shall be issued after getting the report from the institutions about the attendance of the candidate and the program conducted. तो जितनी ज्यादा आप अपनी अटेंडेंस रखेंगे, अपना कैमरा ऑन रखेंगे और आपका 80% अटेंडेंस रहेगा, आप पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब इन द सेंस कि आप जितना ज्यादा इंटरैक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा है. ठीक है, तो आपका सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा. सो सिलेबस में सबसे पहले है आपका यूनिट 1, हैविंग द थ्योरी, द मीनिंग, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा. ठीक है. द सेकंड वन इज द स्कूल्स ऑफ योगा, द वेरियस schools and various philosophies as per the different schools of yoga practices. The third is the fundamentals of yoga. Yoga practices for health
and wellness. What are the guidelines for the yogic practices? Yogic principles of food. Okay. Then we have the prayer, the concept of the prayer, how we have to start the yoga practice from the prayer, the recitation of the prayers, what are the different hymns and the different prayers that we can have, cleansing practices, the techniques, the contraindications, the benefits, whether it's neti, tratak, kapalabhati, okay. The kriya or the chalana kriya, the loosening practice, the technique, contraindications and benefits. So it's the neck movement, shoulder movement, bhujavali shakti vikasaka, purna bhuja shakti vikasaka, trunk movement, knee movement. All in all, the joint movements or the practices where you will be able to have the preparatory movements first. Then comes the yogasana, having the technique, contraindications, and benefits. Okay, so having the standing posture of Tadasana, Vrikshasana, Ardha Chakrasana, Padahastasana, and Trikonasana. Sitting postures, Bhadrasana, Vajrasana, Ardha Ushtrasana, Shashankasana, Mandukasana, Uttana Mandukasana or Vakrasana. So having the standing sitting postures, then the prone and the supine postures. So we have the 4 categories of the asana: standing, sitting, prone, and supine. So in the prone, we have the Makrasana, Bhujangasana, Shalabhasana. Okay. Supine postures, Uttana Padasana, Ardha Halasana, Setu Bandhasana, Markatasana, Pavan Muktasana, and Shavasana. Okay. So everything which is giving the relaxation, which is giving the stretches to the spine, that is all taken in the spine postures. Next is the pranayama technique, contraindications and benefits of pranayama. So you must have heard of Anulom Vilom and Nadi Shodhan Pranayam, right? Anulom Vilom and Nadi Shodhan Pranayam. Ujjayi, Ujjayi without kumbhak, that is without retention of your breath. Sheetali without a kumbhak. Brahmari without a kumbhak. So very easy pranayams, okay? So all of those techniques, the contraindications and the benefits. Next is the dhyana. Dhyana having the technique and the benefits. Okay, so having the dhyana, we are talking about the dhyana related to the body awareness, the breath awareness, and the yoga nidra. All of the 3 are the dhyana with the techniques and the benefits. Okay, so yoga nidra also has certain steps. Steps as in how you start, what to concentrate on, and how long is the duration of yoga nidra. Having the body awareness, when you do the asanas, you have a dhyana on that. There is also certain techniques of doing the dhyana when you do the body awareness, and having the breath awareness is also having the dhyana. So at the time when you are doing the pranayam, which is a breathing technique, now there is also a breath awareness. Having the dhyana, it is also breath awareness during the time when you are doing the pranayams. Having and sitting and doing the breath awareness, having the breath awareness is different. Okay. Now, related like who's this? I am getting Can you please unmute? I think Prabha Das has joined. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just now. हेलो मैम. हाँ, हेलो प्रभा जी, have you joined? हाँ मैम, सॉरी मैं मतलब वो बारिश दे रहा था, ट्रैफिक में फंस गई थी. अच्छा अच्छा,
नो इश्यूज। ओके मैम। और किसने ज्वाइन किया है? आई थिंक कभी। सो प्रभा जी, आप अपना इंट्रोडक्शन बाद में दीजिएगा, एंड नीलम जी आप भी अपना इंट्रोडक्शन बाद में दीजिएगा, ठीक है? सभी का इंट्रोडक्शन लिया गया है एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास. सो वंस आई कंप्लीट द सिलेबस एंड द इंट्रोडक्शन एंड टुडे इज द फर्स्ट क्लास, सो लेट मी कंप्लीट द टॉपिक फर्स्ट, और आप जो जिन लोगों ने भी अभी ज्वाइन किया है तो वो अपना इंट्रोडक्शन बाद में देंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। All right. So having the classes related to the life management and preventive health. ठीक है? So जितने भी आपके लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड या आपका it's always said कि diseases होते हैं, prevention is better than cure. Okay, so when there is an extreme level where you have to take medicines, it's better to have the preventive steps before. So yoga is having that preventive health. It is providing you a better way of having the preventive health, so that there is the good way that you can, just have a proper way of living, have a proper way of lifestyle through the yoga practices, and any of the diseases will not be will be, of course, the body will be healthy and will be disease free. So that is the important thing. So the books for reference, आप और भी बुक्स जो है वो रेफर कर सकते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से कॉमन योगा प्रोटोकॉल की बुक होती है, सरस्वती स्वामी सत्यानंद जी की बुक है, सो आसना प्राणायाम मुद्रा बंधा, and there is the other manuals for the school teachers, yoga teachers manual for school teachers, जो MD NIY से provided है. So you can see that as well. So all of these books are good to refer and to know about our yoga volunteer program. तो आपने ये जो जितना सिलेबस देखा है इस योगा वॉलंटियर प्रोग्राम में, तो आप वो सभी इस पर्टिकुलर सिलेबस में आप देख सकते हैं कि अगर इसके बारे में और थोड़ा सा आपने पढ़ना हो, आसन के बारे में पढ़ना हो, प्राणायाम के बारे में पढ़ना हो, तो ये बुक्स बहुत अच्छी हैं. एंड स्पेशली if there is something that you want to know about pranayams and even the asanas as well, तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की बुक बहुत अच्छी है, ठीक है? सो ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से भी जो आपको कॉमन योगा प्रोटोकॉल से रिलेटेड सिलेबस भी मिलता है, इट इज रेडिली अवेलेबल. बट ऑल्सो अगर आप इसमें देखेंगे, अगर आपको कोई कुछ ऐसा मटेरियल है या दिखता है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से है, इफ यू आर एबल टू सी दैट, इफ यू कैन सर्च फॉर दैट, you can have that as well, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से होगा. And if you want any kind of this kind of apart from this yoga certification board, जो yoga volunteer का syllabus है, so you can have you can also have the syllabus from this common yoga protocol. अगर available नहीं होता है on the internet, you can have it from the ministry of आयुष. आपके जानकार में कोई अगर हो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, तो वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. कोई ऐसे इंस्टीट्यूट हो जो आपको प्रोवाइड कर सके कॉमन योगा प्रोटोकॉल, आप उनसे ले सकते हैं, ठीक है? टू नो मोर अबाउट इट, ठीक है? सो सबसे पहले द बेसिक थिंग, आज हम बात करने वाले हैं द मीनिंग ऑफ योगा, ठीक है? सो इन द मीनिंग ऑफ योगा, हाँ, सो इन द मीनिंग ऑफ योगा, सभी ने सिलेबस तो देख लिया ना अच्छे से? आई हो और आप सभी ने बताया कि आप सभी के पास सिलेबस है, यू ऑल हैव द सिलेबस विद यू, ओके? सो having the meaning of yoga, what is the meaning of yoga? The meaning of yoga is all about the union of mind, body, help of various practices, asanas, pranayams, okay? And also having the awareness how your prana flow is there, like how your prana is flowing when you are on the mat and doing the asanas, and when you are doing the pranayams, how your prana is flowing. So in that way you will be able to have a proper balance, how you are able to balance and bring the harmony between your mind and body. So if your mind is completely balanced, so having
that yoga, when it is included in your daily practices, you will always experience that your body becomes stable, your mind becomes stable, right? So, any one of you who can share their experience, that of course, some of you have given your different experience, and of course, that will be definitely like your harmony between mind and body will be. You might have when your spiritual journey or the spiritual realm, you take it from the spiritual realm as well. If that has also given you a lot of benefits, the yoga has given you a lot of benefits up to that level. So I think you must have also experienced the mind and body balance. Okay, so anyone who has to share something that yoga has brought a harmony between mind and balance, and how, so can you share, any one of you जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, क्या वो अपना शेयर कर सकते हैं कि उनके लिए कैसे उनका एक एक्सपीरियंस रहा जब उन्होंने योगा प्रैक्टिस किया, या जब भी लाइक वेन एवर दे हैव डन ईदर द सेल्फ प्रैक्टिस या किसी इंस्टीट्यूट से उन्होंने योगा प्रैक्टिस किया, एनीथिंग, या कभी कभी किसी योगा प्रैक्टिशनर ने आपको योगा करवाया घर पे, तो क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग द योगा प्रैक्टिस कि आपको एक माइंड एंड बॉडी का हार्मनी लगा, like you are able to have a stable mind and the stable body? Anyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Prabhaji and हाँ and who other? Randhir ji, right? Ji, ma'am. Yes, ma'am. So please share your experience, like in what way and how you have come across this harmony between mind and body. Did it work for you by your self practice, or somebody who has taught you or made you practice from an institute? But I was practicing with my friend. Ah, So on an everyday basis, we used to practice for half hour. okay. So when we were practicing Anulom Vilom, Hmm. it feels like as if your entire soul is connected with your body and mind. We feel as if we are somewhere out of the universe. It gives inner peace. Great, great. It's good, Randhirji, that you practice with someone, because it is always required. If you practice with someone, like any of the things, like whether it's the asanas, whether it's any of the things, you do the yoga together. It's good way to practice, because it creates a kind of that a kind of a way, that discipline that you are not able to miss out. I think that is good. Prabhaji, please share your experience. हाँ मैं मतलब ज्यादा तो नहीं, जैसे 6 महीने से योगा शक्ति योगा सेंटर है वहाँ पे मैं करती हूँ, मतलब वहाँ पे हम्म जाके प्रैक्टिस करती हूँ। तो मेरा जैसे कि 3-4 साल से पीसीओडी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, फिर हम्म मानसिक पेन होता है बहुत ज्यादा, मुझे पेन किलर खाना पड़ता है, 18-19 डेज मेरा रहता है। तो हम्म फिर मतलब मैंने बैंगलोर से भी दिखा के आया, वही दवाई खाओ फिर छोड़ो फिर हो जाता है। तो अभी जैसे कि मैं योगा कर रही हूँ, तो मतलब मैं फील कर रही हूँ जैसे कि 18-19 डेज होता है वो अभी 12-12 दिन 10 दिन ऐसे रहता है। और मेरा पेन वैसा वाला, मुझे पेन किलर खाने वाला पेन नहीं होता है मुझे। और हम्म मतलब मेरा स्लीप डिस्क भी है। तो जैसे कि मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी पहले, अभी तो मैं नीचे बैठ सकती हूँ। मतलब मेरा मतलब फिजिकल मैंने बहुत मेरा मतलब एक्टिव हुआ है। इसलिए मतलब मैं इससे जुड़ा रहने के लिए तो मैं मतलब ये कोर्स भी करूँ, जैसे कि मैं हमेशा ये करती रहूं मतलब। Very nice. Very great. Great. You had a very great experience. Yes, Neelam ji. मैंने भी मतलब 21 डेज का ऑनलाइन योगा प्रैक्टिस किया था स्टार्टिंग में। तो हम्म मैंने देखा कि कैसे अपने बॉडीज में मतलब विद इन 21 डेज आई फील दैट चेंजेस इन माई बॉडी। सो हम्म तो उसकी वजह से मुझे लगा कि मतलब योगा, पहले मुझे ऐसा लगता है योगा बहुत स्लो प्रोसेस है ऐसा, बट मैंने वो 21 दिन जब अटेंड किया तो पता चला कि उसमें कितने सारे बेनिफिट्स है। और इवन मुझे प्रेगनेंसी के बाद वो जो साइकेट्रिक के रहता है जो पर्नस दब जाती है, तो वो भी हम्म मेरा रिलीज हो गया। फिर मेरे जो पीरियड्स के प्रॉब्लम्स थे वो भी सारे रिलीज हो गए। तो मतलब मुझे पता चला कि योगा इट्स मोर बेनिफिटेड इन एवरीथिंग। मतलब अगर मेडिसिन से भी दूर रहना है तो योगा इज गुड। Right. Yes, Pooja ji.
Thank you, Neelamji, for sharing your experience. Yes, Pooja ji. Hi, I can correlate these experiences. I can explain, I mean, I can put forth these experiences in two things. Mm-hmm. One is since जब से मैंने योगा प्रैक्टिस करना स्टार्ट, आई डोंट नो, मतलब मैंने ज्यादा ट्रैक नहीं किया कि इट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ योगा और व्हाट, बट आई कैन से इट माइट हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ योगा. हम लोग जो कोविड में वी यूज टू चेक पल्स ऑक्सीमीटर से, वी यूज टू सी आर ऑक्सीजन एंड वो सब, एंड उस पे अपना हार्ट रेट भी दिखता था. हाँ. So most of the times लोगों का it goes above 70, 80 वगैरह, but it has never gone beyond 60 for me. Even in pressure situations, it has been like 55, 50 to 60 के बीच में. So yeah, one that experience was there, and अभी तक वही maintained है. मतलब even if I don't practice sometimes, अभी तो 1 साल में मैंने किया है, बट उससे पहले काफी ब्रेक पड़ता था प्रैक्टिस में, बट मैं करती थी लाइक एवरी ऑल्टरनेट डेज वगैरह भी. बट द सेम एक्सपीरियंस हैज परसिस्टेड कि हार्ट रेट अपना लाइक कंट्रोल में रहता है. सो इट योर हार्ट बिकम्स लाइक उसका रिदम चेंज हो जाता है विथ योगा. एंड अनदर थिंग इज इन योगा निद्रा आई हैव एक्सपीरियंस कि व्हेन दे से कि जस्ट रिलीज योर स्ट्रेस, एक एक ऑर्गन को फोकस करके रिलीज योर स्ट्रेस करते हैं, एंड जैसे ही सारे ऑर्गन्स खत्म हो जाते हैं, लाइक डी फोकस, फोकस हटा दो वो ऑर्गन से, यू एक्चुअली फील दैट योर बॉडी इज फ्लोटिंग. And I have experienced that कि it was like yeah, I'm really floating on water or something, ऐसा कुछ तो feel हो रहा था during yoga nidra sessions. Okay. So is it like कि आप जब भी जो एक्सपीरियंस करते हैं, क्या वो एक्सपीरियंस आप वो रिपीटेड होता है? Are you able to have that same Yoga experience? nidra में yes, it is repeated. It happens most of the times. Okay. Yeah, and it's conscious efforts. ऐसे नहीं कि मतलब मैं सो जाती हूँ वगैरह, वैसा कभी नहीं. I get up the moment the session is over. But yes, I have experienced that. Okay, okay. So again, Yoga Nidra is the very, very, if it's a very good technique in which you will be able to experience that without knowing, without having effort, you will be releasing all the kind of tensions. Like especially if I talk about the mind gets really, really relaxed, and most of the things which are piled up emotions, I would say the emotions which are so many emotions accumulated which you do not know, sometimes unconsciously we are having so many emotions that we are not aware of it, so it gets reduced and you find yourself in a better way. Yoga nidra is very, very, very effective, right? All right. It was very nice hearing from you your experiences. I think you have taken and your practice and have experienced so many things. It's good that you are already into a yogic lifestyle, and since you are also having this course, definitely I think you will be going far, far, far long in your yoga practices. So, having seen the harmony, which we called yoga, brings the harmony between mind and body. Yes, it's an ongoing practice, and we do not know one thing that despite we do yoga practices, चाहे हम yoga practices भी करते हैं, हमें ये पता है कि कोई भी एक ऐसा टर्म नहीं होता कि perfect body कुछ हो. ठीक है? There is nothing called as the perfect body. Every time, every day is a new experience which is being given to our body when we are aware towards the body. Why? Because every day we have different situations, we have different things that we see, we hear, we eat also. We eat every day something different, right? We cannot have the same thing to eat. Similarly, is our body as well. When we are into the yogic practices, there are the different experiences altogether. So, having a good and the continuous way of practicing the asanas is equally important so that you have a good way of having your knowing your body and it becomes stable, and with that practice of your asanas that will bring, if it is being done with the proper
knowing and aware, being aware of your prana as well, your breathing. If that is also connected, that becomes a more better way, right? So having seen your yoga practices helps you in a better way, whatever you do, whatever aspect you do, whether somebody has their own purpose of joining yoga, ठीक है हमें वेट लॉस करना है, हमारा कुछ डिसीज है, हमें ऐसा पेन होता है तो हमें वेट लॉस करना है, लेडीज में पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, हमें योगा करना है और अपने आप को ठीक करना है, हमें एक बेटर वे में अपने आप को, इट गिव्स यू अ हैप्पी फीलिंग। योगा करने से आपको एक हैप्पी फीलिंग भी बहुत आती है। सो दीज आर द डिफरेंट वेज एंड एवरीबडी हैज द पर्पस। बट हम योगा को धीरे धीरे अपना बॉडी अवेयरनेस से धीरे धीरे अपलिफ्ट करते हैं कि बॉडीली हम हेल्दी होते चले जाएं, हमारा ब्रेथ अवेयरनेस बढ़ता चला जाए, एंड देन वी आर एबल टू अपलिफ्ट आवर सेल्फ एंड गेट द मोस्ट बेनिफिट्स ऑफ योगा। दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आई थिंक जिन लोगों ने भी अपने आप को हेल्दी किया है, अपनी बॉडी को ठीक किया है योगा से, सो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट एंड अ वेरी गुड अचीवमेंट। ओके, यू शुड क्लैप फॉर योर सेल्फ, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपने योगा को एक अच्छा माध्यम चुना है जिससे कि आप अपनी हेल्थ को आगे अच्छा रख सकें। सो प्लीज कंटिन्यू विद दैट, जिससे कि आपके लिए ये ना हो कि आप कभी भी अपनी योगा की प्रैक्टिस को पीछे रख रहे हैं। ऑलवेज टेक योर योगा प्रैक्टिसेस फर्दर। नाउ नेक्स्ट, इट इज गुड जब आप धीरे धीरे आगे अपने आप को देखते हैं योगा प्रैक्टिसेस में, आपकी जब हेल्थ अच्छी होने लग जाती है तो आपका एक ऑटोमेटिकली एक इमोशन जो होता है वो एक इमोशनल स्विच भी हो जाता है। आप बेटर फील करते हैं, जो आप पहले थे आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि देखो, I have not expected anything from anyone, but of course this is something which is going to be with you, your body is going to be with you, nobody is going to take care, like nobody knows that what is happening to your body. So if you are able to take care and you have achieved a good way of understanding your body, that is a good achievement. And next level, of course, when you are able to have the awareness about your breathing, that is also really, really good. So having the awareness of the breathing is also equally important. So what happens, we are always, probably we will be able to understand the asanas, but कहीं ना कहीं आजकल आप देखेंगे कि फ्रेश ऑक्सीजन आपको बहुत ही कम मिलेगी। ठीक है, हमारी लंग कैपेसिटी बहुत ही कम है। हम एक बार को अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए प्राणायाम्स या डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्राणायाम्स ले सकते हैं, but at the same time the shortness of breath is there. Some people might have the shortness of breath, some people might have a problem like they are not able to have the proper to the fullest capacity, they are not able to breathe. So lung capacity को increase करना, एक अपनी डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग को इफेक्टिव करना, दैट इज समथिंग टू द अनदर लेवल दैट has to be achieved. Okay, so having your breathing practice is good, you are also providing yourself, your nadis, the purification process. So that is also important to have that internalization process to happen. Externally you are doing the asanas on the mat, which gives you the benefits. The stretches will happen, the warm up will be done, the asanas will be there, and you feel the strength. You will feel the strength on your shoulders, on your palms, on your legs, on your feet. You get the strength and you feel confidence about it. But if you are doing the purification process with the help of the breathing practices, doing the pranayams, that is also give you immense benefits. That is another way that your body will feel lighter, right? More and more light. So, having said that, yoga is also about the asanas altogether, the pranayams. It is about the meditation. It is about the dhyan. It is about the mudras, bandhas, and all in all,
If I talk about the aim of yoga according to the Hatha Yoga practices, Hatha Yoga is one of the, I'll be describing the various schools of yoga. If I talk about the Hatha Yoga practices, so the most, just a minute. So the aim of the yoga is to have a healthier life, to be a healthy being and achieve your higher purposes, your higher consciousness, and uplift your consciousness, uplift your awareness. Okay, so that is the aim of yoga. It is not about the body, it is about the body, mind, and the soul. Okay, so किसी ने अच्छा, anybody who can tell me about their prayers? तो any person who can tell me कि आप कौन सा prayer recite करते हो जो आपको बहुत अच्छा लगता है अपनी योगा practice से करना? You can share that. Anyone or any shlokas? Yes, Pooja ji. Yeah, I recite Gayatri Mantra as of now because the sun is the source of energy all over the planet. So I believe in that, so I recite that mantra. Great, great. Anyone else? Ma'am, I will start with the home chatting. 11 time home chatting, then start practicing yoga. ओके, ओम चैंटिंग। तो ओम चैंटिंग आप कैसे करते हैं नीलेश जी? इनहेल करना है होता है पहले श्वास को, हम्म, और फिर ओ ऐसे बोलना होता है। इसको ओके। उद्गीत प्राणायाम इट कॉल। हम्म, यस, इस तरह से। तो ओम का जो 3 अक्षर का रहता है, ओ म, रू म। तो उसका आपको मीनिंग पता है? आप बता सकते हैं? मीनिंग तो मैम नहीं एक्चुअली बहुत टाइम हो गया एक्चुअली रीड करे, अभी उसका मीनिंग नहीं मालूम, पर इससे एनर्जी अच्छी मिलती है अपने नाभि से लेके। जैसे हम्म, नाभि से एक आवाज निकलती है ओम की, इसे निकालनी होती है लास्ट तक, तो हम्म, उससे एनर्जी अच्छी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। ओके। सो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं वैसे बताऊंगी कि अ, उ और म जो है शब्द जो है जिससे ओम बनता है, और हम ओम मतलब एक उच्चारण जिस तरह से ओम का करते हैं, तो अ का अर्थ अलग होता है, उ का अर्थ अलग होता है और म का अर्थ अलग होता है, जिसमें ऑल इन ऑल मैं एक मतलब लाइक आई विल डिस्क्राइब इट लेटर बिकॉज ये एक टॉपिक है प्रेयर्स का भी, ठीक है? तो उसमें हम इसके बारे में ज्यादा लाइक बात करेंगे। तो जैसे अभी फिलहाल आपने बताया ओम का, तो एक होता है आपका सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे आपकी एनर्जी कैसी होती है, देन आपका जो जैसे जैसे दिन होता है, तो कैसे कैसे आपके अलग अलग गुण जो होते हैं वो आपके वेरी करते हैं, ठीक है? तो हैविंग सेड, व्हेन वी आर डूइंग द ओम चैंटिंग, तो उसमें हमारी जो एनर्जी लेवल है थ्रू आउट द डे, फ्रॉम द मॉर्निंग, देन द आफ्टरनून और इवनिंग एंड देन एट द नाइट एज वेल, तो हम उससे अपनी एनर्जी को अलाइन करके रखें। सो हैविंग सीन दैट हम लाइक om is keeping us completely at a level where our consciousness is always maintained. Okay, so um, anyone else who has to say about their own prayers or their own shlokas can raise their hand. Give me a moment, मैम, okay? Give me a moment. You can raise your hand so that after that I'll just get to know who is speaking, okay?
ना ওমা স্নেহার একটা ফোন করো তো, আমি করতে পারতাম না, তুমি স্নেহার একটা ফোন করো। স্নেহার একটা ফোন করো, আমি ক্লাস করলাম। স্নেহার একটা ফোন করো, আমি ক্লাস করলাম, ফোন করে দিবা আমি রুমে যেতে মোবাইলে চার্জ দেয়। স্নেহার একটা ফোন করো তো। Okay, so I'm sorry, since there was a power cut, so my internet, which I had, already had that internet, that was gone. Okay, so just a minute. Yeah, so who was it? Randhir ji, right? Randhir ji had said about something about his own recitation. I think he has written that I do play some music and I do Gayatri mantra, right? Yes, ma'am. All right, great, great, great. That is a good way of keeping yourself happy, and music is also a good way where you can um, have your abilities to increase and also connect with the higher consciousness. All right, great. So can anybody tell me, अच्छा अभी मैंने जैसे स्टार्ट किया ना क्लास, तो अभी ज्यादातर I start the class with a prayer. You must have heard of सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै. Yeah, can anybody tell me the meaning of this prayer? जो हम स्टार्ट करते हैं इस प्रेयर से, जो भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं. क्या कोई इसका मीनिंग बता पाएगा? सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै. नो, सभी I could, right? Everybody has recited their prayers in the class, right? Yes, ma'am. Prayer means to have a good energies that everybody will be benefited. If I will be reciting this prayer as a teacher and you are taking the class as a student, so this prayer is going to have the starting, that so that our bond, our way of having the interaction as a student and as a teacher remains good, and you're receiving and I being giving and able to have the benefit altogether. Okay, even I somewhere, just a minute. Okay. So, having this prayer, starting with this prayer, it will be benefited for the teacher and the student as well, and our way of having the class altogether. And at the end, there is the closing prayer as well that is being done. Why it is being done? So that
we end the class in a positive way to have a good energy later and start the class again, come up with a good way and have a attitude of compassion towards each other, right? So which is the closing prayer that you have recited at any point in time? The closing prayer. इज त्वमेव इज माता ज पिता तमेव. अगर हम जो पृथ्वी है ना, जो धरती माँ, उसको नमन करते हैं और बोलते हैं कि तमेज माता ज पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव, वसुदेवम सुतम देवम कंसारुणमंदरम देवकी परमानंदन कृष्णम वंदे जगत. फिर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. ऐसा करके चारों दिशा में प्रणाम करते हैं. Very nice. Okay. So, have you heard of Loka Samasta Sukhino Bhavantu यस मैम. or Sarve Bhavantu Sukhina? या सर्वे भवन्तु सुखिनः माँ हाँ विदिशा वहे. हाँ. So, any of the prayers, ज़्यादातर क्या होता है, most of the time, the teaching, when the teacher teaches, so they have their own way of having their own prayers. So I prefer Sahana Bhavatu, Sahana Bhanaktu for my teaching, so that my teaching goes effective. Even there is no problem that I will face in my teaching. And you as a student and I being the teacher, there is no kind of, I would be able to help a lot. And as a student as well, you will be able to also have a good way of interaction with me. Okay, so that way I take my prayers initially like that, and I believe that, actually I believe, and that's why I start my class like that. Today was an introductory session. From tomorrow, from Monday, I'm going to take the session. Kindly, you like more officially, of course, because tomorrow will be like a holiday. So from Monday, we are going to go ahead from our class, from this particular batch from today. So ending the prayer happens with Sarve Bhavantu Sukhina. May all beings be happy. May there be peace, and they be healthy, and they lead a healthy life. Pooja ji has said that I also chant in Chitta Padena Vacha. Okay, very nice, very nice. That is also very nice prayer. Yes. Uh, okay, so that is an opening prayer. You can take it as an opening prayer as well. मैम, आई हैव वन क्वेश्चन. ये जो भी ट्रेनिंग है वो एवरीडे 1 आवर चलेगा ना? हाँ, it's going to be 1 hour training. ओके मैम. हाँ. Okay. So, just because I have power katna, I was not able to recite the prayer and initiate my classes. I'm so sorry about it. Since I think it is a 1 hour class and it is already 8:07, so I will be signing off for today. I will be meeting you next on Monday at the same time, 7 p.m. And I will be starting with properly like the meaning, the definition of yoga, history of yoga, development of yoga, and probably I will be also taking the whiteboard help so that I will be able to write on this whiteboard on Zoom and explain you better. Okay. All right. Please sit comfortably in wherever you are. Please sit comfortably and join your palms together. And gently close your eyes. Breathe in deeply and breathe out. Once again, breathe in deeply and breathe out. Let's begin with the Om chanting, followed with the closing prayer. Om.
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 Take your palms together and generate heat without opening your eyes. And slowly and gently bring both of your palms on your eyes and all over to your face. अपने पूरे चेहरे पे अपने palm को लगाएंगे अपने face पे. Give the warmth of your palms on your face. Gently bring the palms in front of you. Slowly open your eyes. Have a gentle smile on your face. अपने चेहरे पे अच्छी एक मुस्कुराहट रखेंगे. धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और अपनी हथेलियों की ओर देखेंगे. Thank you, everyone. Thank you for today's session. I hope you have liked today's session as well. Can I have your attendance, everyone? आप सभी का attendance मुझे लेना होगा, ठीक है? All right. Please confirm me one thing that my audio was clear throughout, despite there was some the darkness which was there. Despite that, my audio was clear to you. Yes, it was Yes, ma'am. clear. All right. Thank you. Yes, Play the next time on whenever there will be the next class when we are going to start from Monday. So there will be no issues. The voice clarity is already there, so you will be able to see me also, and there will be no problem at all. All right. So all right, everyone. Thank you, and Okay. signing off for today. We'll meet on Monday. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am.